वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दिशा एंड सो गाइस आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है द किंगडम ऑफ अल्लाह, नो योर क्रिएटर। सो गाइस ये जो वीडियो बहुत स्पेशल है, हमने बहुत टाइम से इसको सेव करके रखा है कि हम इस पे बनाएंगे रिएक्शन, बट इट्स प्रीटी बिग, तो हम थोड़ा डिले कर रहे थे कि बाद में बनाएंगे अच्छे से। यस सो गाइस आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हमने सोचा इस पे रिएक्ट करते क्योंकि जब ज़्यादा टाइम होता है तो हम बहुत इजीली और आराम से रिएक्ट करते हैं एक्चुअली, ताकि हम पूरी चीज़ समझ पाएं, जल्दबाजी में वीडियोस ना बनाए गाइस। तो ये रैशनल बिलीवर के चैनल से हैं और इनकी वीडियोस तो अमेजिंग होते हैं, एज यू गाइस नो। सही में हमने इनकी 3 आई गेस 5 से प्लस वीडियो पे रिएक्ट कर लिया और हमें इतनी पसंद आई है ना इनकी वीडियो, मतलब आप लोगों को भी पसंद आई होगी एक्चुअली गाइस। तो अभी देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है, हमने नहीं देखी और हमें ये भी नहीं पता इस वीडियो में क्या होने वाला है। यस बट नाम से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, नो योर क्रिएटर किंगडम ऑफ अल्लाह। अगर गाइस आपने वीडियो देखी है पहले से ही तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो और जिसने नहीं देखी हमारे साथ देखें, और जिसने देखी तो हमारा रिएक्शन भी देखें। यस गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो लाइक भी गाइस जो Who is Allah? We want to refresh our iman. We want to be attached to our Creator. We want to fear nobody but Him. We want to please none other than Him. So who is Allah? Come with me to Surah Al-Hadid, chapter 57 of the Quran, where Allah, He says, introducing Himself to us, lahu mulku as-samawati wal-ard. He is Allah who has the kingdom of the heavens and the earth. Yuhyi wa yumeet, He alone is the one who gives life and death. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, and He is able to do whatever He wishes. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Everything in the heavens and the earth glorify Allah, and He is the most mighty, the most wise. Ya Allah, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Do you know anybody who shares even one of these characteristics with Allah? Who is Allah? Come with me to chapter 6 of the Quran, Surah Al-An'am. Allah says, وعنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. He has the keys to the unseen, no one knows them except Him. ويعلم ما في البر والبحر, and He knows everything that is on land and everything that is within the sea. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, and there isn't a single leaf that falls from any tree except that Allah has knowledge of it. ولا حبة في ظلمات الأرض, and there isn't even a grain within the darknesses of the land. ولا رطب ولا يابس, nor is there anything moist or anything that is solid إلا في كتاب مبين, except that Allah has knowledge of it. It is written within a clear record. La ilaha illallah. We bring to your attention, dear brothers and sisters in Islam, the description of just one of Allah Almighty's creation. He is an angel, the chief of the angels, Angel Jibreel alayhi salatu wassalam. The Messenger sallallahu alayhi wasallam saw him in his true angelic form. Ahmad narrates in his Musnad that Abdullah ibn Mas'ud, the companion, he said, رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. He says the Prophet ﷺ saw Angel Jibreel in his true angelic form, and he had no less than 600 wings, and every one of those wings was huge enough to fill the horizon and cover the skies. One wing spread out covers every cloud, covers every star, covers the sun and the moon, covers every inch of that blue sky that we see. One wing. What then can you make of 600 wings? And if this is the majesty of just one of Allah Almighty's creation, what then can you make of the beauty and the majesty of the Creator Himself? La ilaha illallah. I bring to your attention, dear brothers and sisters, yet a second creation from Allah Almighty. This is the description of one of the angels who are carrying the throne of Allah. Abi Dawood narrates in his Sunan on the authority of Jabir that the Messenger sallallahu alayhi wasallam said, أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه
مسيرة 700 عام. He said, alayhi salatu wasalam, Allah has given me permission to give you, O Muslims, a description of just one of the angels that are carrying the throne of Allah. He said the distance between his earlobe and his shoulder is the distance of 700 years worth of travel. If that is the distance between his ear and his shoulder, a hand span of a distance for us human beings, what then about the size of the rest of this angel? What then about the enormity of the rest of his body? If this is the size of one of the angels who are carrying the throne of Allah, what then about the enormity of the throne of Allah itself? And if this is the size of the throne of Allah, what then about the Lord and the King of that throne? The ni'mah of seeing. Today we've forgotten. Today you and I think what? That to see I need a pair of eyes. You're wrong. Because there are millions around the world that have eyes, but they can't see. It is Allah that allows you to see. Today you think to hear, I need a pair of ears. You're wrong. Because there are millions around the world that have ears. They're stuck on their heads, but they can't hear, my brother. It is Allah that allows you to hear. Today you think to walk, I need a pair of legs. You're wrong. There are millions around the world that have legs, but they can't walk. It is Allah and Allah alone that allows you to walk. Allah, not you. Allah, not you. Allah doesn't need you, my brother. Allah doesn't need me. Allah doesn't need us. And we have to understand, because this is Aqidah. You have to know this so that when you worship, you are always humble. When you worship Him, you never have pride. When you worship Him, you never have arrogance. Because you know, at any given point in time, I am where I am only through His mercy. Only through His rahmah, I am where I am. Not because of your own actions. And to know with depth, with yaqeen, with certainty, that Allah, the King of Kings, doesn't need anyone. He doesn't need anyone, my brothers. Wallahi, everything you see around you, everything. Today, the Muslims have so much fear in their hearts. Fear of the kuffar, fear of the West, fear of laws, fear of regulations, fear of this and fear of that. But to know that Allah Azza wa Jal is not in need. Wallahi, my brothers, wallahi, I take an oath by Allah. You have to come to terms. You have to come to believe with certainty that every single human being, whoever lived, whoever's living, and whoever is to come and live on this earth, wallahi, every single human being, every single jinn, every single animal that walks on this earth, every single bird that takes the flight in the sky, every single fish that swims in the oceans of Allah Azza wa Jal, wallahi, every single land, every single country, wallahi, with all their governments and all their military force and all their might and all their science and all their money and all their know-how, all with the exception of none, every country, every tree, every grain of sand, every mountain, every river, every ocean, wallahi, every star, every sun, every moon, every single planet, every single angel, the billions and billions and billions of angels, all of them, with the exception of none, Mikael, Jibrail, Israfil, all, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the flag of Allah, the hearts of Allah, all are dead, all are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises, and nothing falls, nothing harms, and nothing benefits in Allah. And until this yaqeen and faith is in your heart, that nothing, that
Everything is dead. Everything. Except Allah. Allah doesn't need anything, anyone. No prophet, no angels, no jinn, no ins. We need Him. He's Al-Hayyul Qayyum. He's the ever living. So you might say, brother, I'm alive. What's so special about that? I'm living. Yeah, but your living is dependent on His existence. He's the first with no beginning. He's the last with no ending. He is Allah. He is Allah. Al-Malik. He's the King. He's the King. He's the one who on the day of judgment, when everything will come to an end, when Allah Azza wa Jal will order the destruction of every living creature, when Allah Azza wa Jal will order the destruction, the death of every human, of every animal, of every jinn, of every angel, until there comes a point where there is absolutely nothing in existence except Allah. And Allah will call out, أين الملوك? أين أبناء الملوك? Where are those kings? Where are those kings who thought they were kings? Where are the sons of those kings? Allah will call out, where are the tyrants? Where are the gangsters? Where are the boys that thought he was something? Where? أين أبناؤهم? Where are their children? Allah will call, where are they? And then He will ask, لمن ملك اليوم? To who is the kingdom today? Who? Nothing will answer. Allah Himself will answer. Today it's to Allah, the one and only. Allah asks, ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض? Don't you see, O people, that everything in the heavens and the earth prostrates to Allah? والشمس والقمر, and so does the sun, and so does the moon. والنجوم والجبال, and so do the stars, and so do the mountains. والشجر والدواب, and so do the trees, and so do the moving creatures. وكثير من الناس, and so do many people. وكثير حق عليه العذاب, and many people will be punished. Ya Allah. Isn't that amazing? From all of creation that's in existence, they are all in submission, all in sujood to Allah, whether we see it or realize it or not. And the only exception is a minority who happen to be from the weakest of all creation. He is man, he and the jinn they लास्ट सो मतलब इन्होंने जिस तरीके से लास्ट में जो आई डोंट नो वो कौन थे, उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव होके ये कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनकी इम्पोर्टेंस को ना भूल जाते हैं ना। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, हम उससे कर रहे हैं। तो उनने उनको याद दिलाया कि आप सब लोग कुछ भी नहीं हो। हालांकि एक छोटा सा ग्रेन भी उसका ना सैंड का कोई वो नहीं है, अल्लाह के बिना कुछ भी नहीं है। सो सब उनका दिया है, वही है, वही सब है। अल्लाह को ही पता है कि मतलब कौन सी चीज़ दुनिया में, धरती में कहाँ पे है। इवन कि इंसान को भी नहीं पता, तो थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग्स का पता होगा। बड़े अगर हम साइंस की बात करें तो पता होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मतलब अल्लाह ने बनाई है, सब कुछ बना के रखा है, चीज़ का उन्हें पता है। उन्होंने यही कहा था कि स्टार्टिंग भी अल्लाह ने की है, वही बिगिनर है और वही एंडिंग करेगा ना। मतलब एंड भी हो जाएगा तब भी रहेगा, स्टार्ट हुई तो। और उन्होंने ये भी कहा कि वही एक ऐसे अकेले हैं जिनका ना ही तो कोई उनकी शुरुआत है, ना ही उनकी कोई एंडिंग है। सो बहुत कमाल की बात कही उन्होंने। ये सबको बनाने वाला आपको पता ही है, एक ही है और
बस यही है कि हमें उनके शुक्रगुजार रहना चाहिए, कभी भी घमंड वगैरह नहीं करना चाहिए कि हमने जो किया है ना वो ये वो हम भूल जाते हैं। दुख के टाइम तो हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन सुख के टाइम उन्हें कोई याद नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है ना। This is very अमेजिंग। सो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल वीडियो थी एंड उन्होंने बताया एंड उन्होंने बोला कि जो अभी मैं जो बोल रही हूँ एंड मेरे जो ये हाथ चल रहे हैं, मैं जब चलती हूँ, ये सब अल्लाह के वजह से है। एंड हमारे दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सो अगर मैं अभी बोल रही हूँ, अगर मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, तो ये सब अल्लाह के वजह से है। सो एंड बहुत इमोशनल वीडियो लगी। मतलब इतने अच्छे बातें उन्होंने बोली एंड दिल को छू गई यार, बहुत ज़्यादा यस अच्छी वीडियो थी। एंड उन्होंने बोला कि अल्लाह को याद करो। अगर हम प्रेयर करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, तो फिर अल्लाह हमारे ऊपर मेहर करती हैं। एंड बहुत ज़्यादा हमें पता चला इस वीडियो में द किंगडम ऑफ अल्लाह, नो योर क्रिएटर। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लगी एंड इतना कुछ पता चल गया है। सो मैं एकदम से मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है एंड आई एम वेरी स्पीचलेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो रही मेरे लिए एंड हमने देखा इस वीडियो को एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। एंड थैंक यू गाइज, आपके वजह से हमें ये वीडियो देखने का चांस मिला। आपने रिक्वेस्ट किया था, सो हम लेकर आए। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आवाज इतना ही था, आगे कॉपीराइट की वजह से था। कॉपीराइट की वजह से आगे का नहीं। इतना अच्छे से समझा है इन्होंने कि अभी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि दुनिया तो रोंगटे खड़े हो गए। और ये जो बता रहे थे मतलब पहले जो और लास्ट में, वो मतलब बहुत सिंपली तरीके से बता रहे थे। पहले के जो थे बहुत सिंपल से तरीके से बता रहे थे और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा था। और दूसरे जो थे मौलाना शायद थे, उनका आवाज़ इतना था कि उन्होंने जो माइक लगाया था उसकी ज़रूरत भी नहीं थी उनको। नहीं, लेकिन डायरेक्टली आवाज़ जा जाता, दिल से मतलब हाँ वही ना कि अल्लाह को अपनाओ, मतलब मानो अल्लाह को, और उसकी सच्चाई क्या है। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसे। और पहले वाले जो मौलाना थे वो बोल रहे थे कि अल्लाह मतलब पृथ्वी पे जो कुछ भी है, जो भी क्रिएचर है, समंदर में है, जंगल में है या कहीं पे भी है, उन सबको जानता है। या समंदर की कितने भी गहराई में हो, जो अभी तक उसका साइंटिस्ट भी प्रूफ नहीं, मतलब उनको ढूंढ नहीं पाए, ऐसे क्रिएचर्स भी अल्लाह जानता है। और एक सिंगल सा पत्ता भी अल्लाह की मर्जी से ही गिरता है, मतलब पौधे के ऊपर से गिरता नहीं है, गिरता है मतलब अल्लाह की मर्जी से ही गिरता है। हाँ, अल्लाह की मर्जी ना हो तो ना ही गिरता है ऐसा। और एक एंजल की उन्होंने मतलब ताकत बताई, मतलब अल्लाह का क्रिएशन है एक एंजल, उसके 600 पंख है और एक पंख इतना बड़ा है कि पूरी कायनात उसके अंदर ढक जाती है। कायनात मतलब पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर ढक जाता है मेरे ख्याल से। और 600 पंख, सोच सकते हैं आप उससे क्या होता होगा। और उन्होंने बताया कान और कंधे के बीच का अंतर, तो 700 साल लगेंगे ट्रैवल करने के लिए, उतना अंतर। तो आप सोच सकते हैं कि वो एंजल बाकी का कितना बड़ा होगा। मुझे तो बहुत मतलब ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला ये था वो। अगर ऐसी बहुत दिल से बता रहे थे कि अल्लाह क्या है, और हमें भी मतलब ये वो इतना दिल से इसलिए बता रहे थे कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे साइंस के पीछे पड़े रहते हैं कि यही सच है, यही सच है, लेकिन ये बयान सुनकर तो मतलब सबको पता चल ही जाएगा कि इतने मतलब ये तो बहुत सुनना भी तो चाहिए ना, इतने ध्यान से साइंटिस्ट लोग कहाँ सुनते हैं। इस वीडियो बहुत सच में गाइस, हम पे सच में वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह की ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच जिसने भी ये रिकमेंड करी, क्योंकि इतनी पावरफुल थी, इतने ज़्यादा पावरफुल थी कि मतलब हम पे वर्ड्स नहीं है क्योंकि करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वीडियो बहुत अच्छी थी, बट जो बीच में जिस तरह बहुत मतलब अग्रेसिव मतलब समझा रहे थे वो, मतलब जिस तरह नॉट एग्रेसिव, लाउड हो गई ना, वो जिस तरह बोल रहे थे मुझे वो लाइक यू नो
उस चीज को सुन के वो चीज फील हो रही थी, गूज बम्स भी आ रहे थे, जिस तरह वो बोल रहे थे ना वो हम चीज फील कर पा रहे थे। एंड एक और चीज इस पूरी वीडियो में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि सब कुछ गॉड है एंड गॉड में ही सब कुछ है, मतलब और जो कि रियलिटी है, यही था कि हर चीज में, जैसे वो बोल रहे थे ट्रीज बर्ड्स माउंटेन्स, सब चीज में वही है, वरना ये सब चीजें नहीं होती। इनफैक्ट जो वो बोल रहे थे प्लैनेट्स वगैरह सब में कुछ हर चीज में, मतलब एक अगर पत्ता भी हिल रहा है ना तो वो भी हमारे गॉड की वजह से, अदरवाइज मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर मतलब कुछ भी हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। और जैसे उन्होंने बोला था, आई थिंक एंजल की बात की थी, जिनका आई थिंक उनके विंग्स की बात की, एंजल्स के विंग्स की बात की थी कि वो 600 समथिंग एंड शोल्डर से लेके अर्थ तक 700 इयर्स का डिफरेंस, मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब कितना ज्यादा। फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, सोचो जब इसमें इतना डिफरेंस है तो पूरी बॉडी कितना होगा, मतलब कितनी बड़ी बॉडी होगी ऑब्वियसली, वो हमारे सोच, हम उतना सोच भी नहीं सकते। मतलब इस वीडियो में हम बोलने के लिए सच में गाइस बहुत सारी अभी भी चीजें हैं कि हम और बोले कि लाइक उन्होंने जब ऐसे बोला, लाइक एक और चीज मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने ना प्रॉपर चैप्टर का वो लेके बताया कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि व्हाट इज दिस। जब वो बोल रहे थे ना कि अल्लाह कौन है, मतलब हु इज अल्लाह, तो उन्होंने वो कोट करके बताया कि इन्होंने इसका आंसर इसमें दिया है कि खुद लिखा हुआ है ये चीज कि ये है। तो मतलब वही यार सोच के सच में ये वाली मतलब सच में सोच के लगा कि हाँ सब चीज में गॉड का प्रेजेंस है। तभी जो नहीं मानता उनको ऐसी वीडियोस दिखानी चाहिए। और एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी कि काफी लोगों के पास, मतलब जैसे इन्होंने बोला था कि लोगों के पास आईज हैं, लोगों के पास सुनने के लिए कान है, बट स्टिल वो वर्क नहीं, मतलब क्यों, मतलब वो सब अल्लाह की तो वजह से है, वो गॉड की वजह से है कि अगर क्योंकि वो जब उन्होंने लाइन बोली थी ना ये वाली कि आईज, पैर है बट चल नहीं सकते, आंख है बट देख नहीं सकते, कान है बट सुन नहीं सकते, बिकॉज उसमें परमिशन ही नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे करके बोला था जो वर्ड, बट नहीं वो जो था वो मुझे बहुत क्लिक कर रहा था। आई गेस द वीडियो एंडेड, आवाज बंद हो गई थी ना शायद इतनी थी, इसके आगे नहीं है वीडियो। ओ माय गॉड व्हाट अ वीडियो। इतनी पहले सांस ले लेते हैं, काफ़ी सारी टू मच इन्फॉर्मेशन, 14 मिनट्स आई गेस सबसे बड़ी वीडियो होगी काफ़ी टाइम से, हमने इतनी बड़ी वीडियो पे कभी रिएक्ट नहीं करा। एग्जैक्टली गाइज, बट क्या वीडियो थी। यस, इट वाज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। जो इन्होंने पूरा जो लाइक टाइटल था उसको पूरा एक्सप्लेन करा, और इतने लाइक जो सेकंड वाले स्पीकर थे ना उनकी बात तो इतने लाइक चिल्स आ रहे थे ना, वो जिस तरीके से मतलब पोर्ट्रे कर रहे थे इतने पैशनेटली, तो बहुत अच्छा सही में। और जिस तरह से एक्सप्लेन करा एक एक चीज़ को कि भाई एक एक चीज़ समझ आ रही थी कि एक्चुअली में ऐसा था, ऐसा है, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करा। और व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलीजन, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने जो भी चीज़ एक्सप्लेन करी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी। एग्जैक्टली। और ये जैसे बोल रहे थे कि क्रिएशन के बारे में मुझे कितनी ब्यूटीफुल है, तो आई थिंक कि हम जिस क्रिएशन को देख सकते हैं वो हम लोग ही हैं, ह्यूमन बींग्स। तो मतलब एक्चुअली ह्यूमन बींग्स कितने कॉम्प्लेक्स और कितने ब्यूटीफुल भी होते हैं। तो यही अगर सुंदर है क्रिएशन, टू थिंक अबाउट द क्रिएटर। ये काफ़ी थॉट था मेरे मन में भाई कि जब क्रिएशन इतनी ब्यूटीफुल है तो हाँ एग्जैक्टली। और मतलब हम भी कितने, वही तू जैसे तू चीज़ बोल रही है कि हम भी कितने कॉम्प्लेक्स हैं कि एक चीज़ हमारी बॉडी के अंदर मतलब ब्यूटीफुल सही में ऑब्वियसली। और इतना यार मतलब सोचो ना हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और ये तो नहीं हो सकता ना कि बस सिर्फ साइंस ही हो इसके बिहाइंड। एग्जैक्टली। उन्होंने पूरी जो बातें बोली, आई एग्री विद एवरीथिंग कि मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं होती बिना मर्जी के। मतलब गाइस आपने वीडियो देखी ली, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बट हमें जो लगा वो यही लगा कि एक्चुअली जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया उस एंजल का, उन एंजल का आई मीन, तो मेरे को लगा कि अब जो हमारी चीज़ एक्चुअली सामने है, जैसे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम खुद को देख सकते हैं, तो वही इतना बड़ा लाइक एक करिश्मा है। जिससे साइंस तो जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ इट्स प्रूवन साइंस से है, बट आई थिंक देयर्स मोर देन साइंस। यस गाइस, हमें तो काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, और अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों बाद हमने इतनी बड़ी वीडियो पे रिएक्ट करा, और हमें लग रहा है कि आगे भी ऐसी वीडियोस पे रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस पे रिएक्ट करने में। इन्फॉर्मेशनल भी होती है और बहुत अच्छी लगी गाइस। और चैनल इनकी वीडियोस तो हमेशा बहुत सारी अच्छी होती हैं। अगर आपको कोई हमें रेकमेंड करने गाइस तो प्लीज़ डू, बिकॉज वी एंजॉय दीज वीडियोस। यस गाइस, और आप देखो ना कि हम कभी भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो पे रिएक्ट नहीं करते, और इसको देखो 17 मिनट हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल रिएक्टिंग।
तो मतलब यही समझ जाओ कि हमें कितनी पसंद आई वीडियो। Yes guys, so that was a reaction. Thank you so much for watching. Bye. Don't go without liking. Yes. Bye.